हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो है व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल रियलिटी एंड फिनोमेना ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इन ए सिस्टमेटिक मैनर। तो पॉलिटिकल स्टडीज़ क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है जो सरकार के बारे में और सरकार के कामकाजों के बारे में बताती है। एंड्रयू हैकर said that political theory is a combination of disinterested search for the principles of good state and society on the one hand and disinterested search for knowledge of political and social reality on the other hand. On the other, nature and scope. Principles or theories or states, governments, principle, etc. are included in the scope of political theory. Number 2, it also studies the principle of lawmaking procedure. Number 3, emergence, nature and development of the states. Number 4, political institution, political phenomenon, etc. Number 5, political science is dynamic or changing with time and circumstances.